Assalamu alaikum class. This is your online lecture of control systems, in which we started our last chapter from your book, and in this chapter we will study about controllers and compensators. Okay, students. In today's lecture, I will tell you people about compensators. What is compensator? How it compensate the systems, why they are named as lead compensator, lag compensator, or lead lag or lag lead compensator. And after that we will study about the systems with proportional controller, with proportional integral controller, proportional derivative controller, and proportional integral derivative controller, PPI, PD, and PID controllers. We will study them later, but in today's lecture we will learn about compensators. Okay, students, we know this is the simplest block diagram of a system, closed loop block diagram of a system with a controller. Okay, actually what we have, this is input, this is the system, or this is the plant, or this is the processor, this is actuator, and after it gives output, and from that output we are taking back it to our input side. This is actually the feedback. When we have any difference in our output and input, that if that difference exists, then that is error. And what we do, we give that difference to the controller. It control that error and give the controlled in output, or the controlled or actuated command to the plant, and it will give us the desired response. If we don't have the desired response at output side, we give it back to the input side. So this is the closed loop system with any controller. This is the block diagram, simplest block diagram. Okay, what is controller or what is compensator? Both of they are doing the same thing. Names are different, but they are same. Compensator is the same as we have controller. Okay, students. So, what is phase lead? As we will study about lead compensator and lag compensator, so we must know what is lead and what is lag. So this is the basic concept we learn from ninth class, that what is phase lead. If we have an input sinusoidal sine input and it passes through a differentiator, that is S. आपको पता है कि हम डिफरेंशिएटर को S डोमेन में S से कहते हैं और इंटेग्रल को 1 by S से. So when a sine signal, when a sine wave, when a sine input is passing through a differentiator, it will be cos t. Okay, so we have input sine t, which has this graph. This is your input graph sine t, and what we get at the output side, we have output, we have cos t signal at output side, which is maximum when sine is 0. So there is a phase difference of 90 degree. So here cos is leading, sine is lagging. Okay, cos is leading by 90 degree from input sine t, or you can say sine t is lagging behind this signal cos t. Okay, so when an output is leading to its input, when output is leading and input is lagging, that kind of if there is a compensator, that compensator will be lead compensator, in which the output would be leading input side input. So this is cos, which is leading, sine is lagging by 90 degrees, so this is phase lead. Similarly, what will be phase lag? Phase lag, if we are giving the cos input and after differentiating, or if there is any signal which like sine t at output, so if that output is lagging behind the input signal, here the output signal is leading to this input signal. So this is how
what do we say, this is a lead compensator or this is a lag compensator? Okay, why we need compensators when we have controllers, or why we use these compensators in control systems? When we design a system, for we have some requirements or we have some specification, according to them we design that system. But there might be a chance that system will not perform satisfactory. Means I design the system according to the given requirements, but when we see the after designing, the system does not give the exact that output, or not giving the satisfactory output, means it does not meet the particular specification. For example, what are the specifications per, or particular specification for a control system? Percentage overshoot, settling time, steady state error, etc. There are many specifications, but we are studying these kind of specification. So there is a chance that we have the percentage overshoot exactly the same what we needed, but the settling time and steady state error are not satisfying. So we will add a compensator in that system to compensate these things. Okay, so some changes may need to obtain the desired response. These changes may be in two forms. One is adjustment of gain, and second is insertion of compensation devices. जो रिक्वायरमेंट हमें दी गई है हम उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देते हैं सिस्टम, उसके बावजूद अगर हमारे सिस्टम वो हमारी वो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको हम ज़ाहिर है डिज़ायर्ड बनाएंगे कैसे? उसको हम डिज़ायर्ड बनाएंगे कैसे? बाय एडजस्टमेंट ऑफ गेन और बाय इंसर्शन ऑफ कंपनसेशन डिवाइसेस, कि हम उसमें कंपनसेटर लगा दें या उसके गेन को एडजस्ट करें. अगर तो गेन के एडजस्ट करने पे काम हो जाता है तो इट्स ओके, अदरवाइज वी हैव टू ऐड सम कंपनसेशन डिवाइसेस, और एंड दोज कंपनसेशन डिवाइसेस आर द कंपनसेटर्स. What is our goal? Our goal is to reduce steady state error as well as percentage overshoot. Okay, we have many other particular specifications like settling time, percentage overshoot, rise time, but why we are focusing on these two things, steady state error and percentage overshoot? Why this is our goal? Because whenever in a system we reduce steady state error, the percentage overshoot always increases, and vice versa. Means whenever you will reduce the percentage overshoot, the steady state error will increase, which is also has disadvantage for our system. So there is a trade off between steady state error and percentage overshoot. So we need to focus more for to compensate both of the things, both of the specification, that is steady state error and percentage overshoot. So this is what I asked you people, that there is a trade-off between steady state error and percentage overshoot. For example, if we increase the gain, steady state error will reduce, but oscillatory behavior will appear in the system, means the percentage overshoot will increase. And if we decrease the gain, the steady state error will increase, but the system's percentage overshoot will decrease. So there is a trade-off between percentage overshoot and steady state error. So what is the solution of this problem? The solution is compensator. What? What? Why? Well, because we know the compensator actually stabilizes the system. Compensator compensates the system. Compensator stabilizes the system. Compensator compensates the system. Compensator helps in achieving the desired response according to our required specifications. So compensator actually adds additional pole and zero in the system. कंपनसेटर एक्चुअली कंपनसेटर हैं क्या, मैथमेटिकली हम उनको कैसे कहेंगे, वो हैं क्या? कंपनसेटर एक्चुअली एड्स एडिशनल पोल्स एंड जीरोस इन द सिस्टम to meet desired criteria.
हमने कहा है ना हमें अपना डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स डिज़ायर्ड क्राइटेरिया मीट करना है, तो वी हैव टू ऐड कंपनसेटर। और जब हम कंपनसेटर ऐड करेंगे तो व्हाट एक्चुअली इज कंपनसेटर, सो कंपनसेटर में एक्चुअली हमारे पास पोल ज़ीरो होते हैं, ठीक है। एडिशनल क्यों कहा गया है, क्योंकि वो सिस्टम के पोल ज़ीरो नहीं होते बल्कि कंपनसेटर के पोल ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। सो द जनरल ब्लॉक डायग्राम एंड पोल ज़ीरो मैप ऑफ लीड कंपनसेटर इज, now student, we are seeing the lead compensator. Okay, if that this is the okay, this is the lead compensator. We have input, this is output, this is feedback block, this can be unity feedback, but this is, and there is another so block h of s. So this is the compensator and this is your system or plant or model, whatever it is. G of s transfer function. So G C of s means compensators transfer function. Also we say it this is controller's transfer function. So this is the block diagram. Okay, how we will plot the pole zero map of lead compensator. In lead, this is sigma j omega axis. In lead compensators, we have 0 before the pole. Okay, like if this is at -2, the pole will be at more distance from this -2, means -2.1, -2.5, -3, -4, -5, any, that p must be greater than z value. Okay, so this p is far away from the 0, so this is the pole 0 map of lead compensator, and this is the condition of a lead compensator, that we have z less than p or we have p greater than z. And if we have been asked for the lag compensator, at that time we will have z at more distance than this p, so there will be the condition z greater than p, but here p is greater than z. So the transfer function of a lead compensator is gc of s, controller's transfer function or compensator's transfer function, is equal to kc, gain of controller, k into s plus z over s plus p. एक ज़ीरो ऐड किया हमने और एक ही पोल ऐड किया है, z नॉट p नॉट, just to differentiate we add z naught and p naught. So this is actually the compensator, lead compensator transfer function, or this is the lead controller's transfer function, that is kc into s plus z over s plus p. So this is the lead compensator which we need to design. Now let's solve an example. This was all about what are compensators, why we need to put them in our closed loop models or before the system, and how they behave. So what are the condition for a lead compensator and what is the condition for lag compensator. Now let's move towards this example in which we will design a phase lead compensator. So the question is, design a phase lead compensator to meet the following time domain specification. ओके हमसे कहा गया है कि हमें एक फेज लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करना है, हमें पता है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है और हम उसमें से वो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। for why we need that phase lead compensator to meet the following time domain specification. ये हमारी टाइम डोमेन, आपको पता है जीटा और टॉ टाइम कांस्टेंट, ये जब हमने किया था चैप्टर 4 था आई थिंक, दीज आर टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन. सो वो कह रहे हैं कि आप ऐसा फेज लीड कंपनसेटर डिज़ाइन करें जिसमें जीटा की वैल्यू 0.707 होनी चाहिए, जिसका टाइम कांस्टेंट 0.5 सेकेंड्स होना चाहिए, ठीक है. सिस्टम आपको गिवन है, दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम विच वी आर गिवन. इनपुट गिवन है, दिस इज़ द कंट्रोलर ब्लॉक और दिस इज़ द कंपनसेटर ब्लॉक. दिस इज़ द सिस्टम which has 3 poles, one at origin, one at -2 and the third one is at -5. So these 3 poles are of the system, and we have the compensator transfer function here, and we know what is the transfer function of a compensator is, that is kc into s plus z over s plus p. So let's see how we will solve and how we will design to meet the required specification.
So step 1 is determine the location of required poles. Determine the location of required pole. Okay, students, we need a dominant pole. Actually, we need a dominant pole. This is the first step. We need to find two poles. So we know this is the equation to find poles. Why we are using this equation? Because we have been given zeta and tau. So by the help of given data, we can find the poles. So S12 is equal to minus zeta omega n plus minus j omega n under root 1 minus zeta squared. This is the equation we learned in chapter number 4. As we have given zeta 0.707, but we don't have omega. So first we will find omega so that we can find the poles. Now we will find omega. So tau is equal to 1 by zeta omega n. This is also the formula from chapter number 4. And omega n is equal to 1 by tau into zeta. And we have given zeta and tau both values. So omega n is equal to 2.83 radians per second. Now we have omega as well as zeta. We can find the dominant, or we can find the required poles location, required location of poles. So by putting the value of zeta and omega n in this equation, we have the poles at minus 2 plus minus j2. We know these are two poles. One is at minus 2 plus j2 and the other is at minus 2 minus j2, because both of they are actually symmetric poles. So what we will do, we will take one dominant pole position. One is here minus 2 plus j2 and the other is here minus 2 minus j2. But what I am taking this dominant location of this dominant pole position minus 2 plus 2j. सेम कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ये वाली लोकेशन ले लें, लेकिन इसमें क्या है कि नेगेटिव एक्सेस पे चले जाता है, आपको वैल्यूज़ उठाने में मसला होता है. कौन सी वैल्यूज़, वो नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, आपको तब आइडिया होगा कि हमने ये पॉजिटिव साइड पे क्यों ले लिया है. सो दिस इज़ द डोमिनेंट पोल पोजिशन. ओके सिंपल. ये अब देखें, सिस्टम में हमारे पास एक 0 पे पोल गिवन था, एक माइनस 2 पे गिवन था, एक माइनस 5 पे था. ये 3 पोल्स गिवन थे. फिर आपको पता है कि हमारे पास क्या है, वी हैव 1 0 एंड 1 पोल ऑफ द कंपनसेटर. सो P naught is assumed compensator pole and Z naught is assumed compensator 0. और इस compensator 0 की वैल्यू हम assume कर लेते हैं, that is minus 1.75. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लीड कंपनसेटर की कंडीशंस ये है कि Z की वैल्यू पहले आए और P की वैल्यू से बड़ी हो और बाद में आए. ठीक है. सो हमें नहीं पता P नॉट क्या है, बट वी नो कि वो Z से ज़्यादा है, बिकॉज हम लीड कंपनसेटर डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे Z नॉट को माइनस 1.75 ले रही हूँ, आप 1.8 1.5 कुछ भी ले लें. ठीक है. सो दिस इज़ द कंपनसेटर 0 एंड दिस इज़ कंपनसेटर पोल. अब हमें क्या करना है, ओके कंट्रोलर 0 इज़ एट माइनस 1.75. ये वही वैल्यू जो हमने कंपनसेटर के 0 की को एज्यूम की है. ये मैंने 2-3 बार आपको पोल 0 प्लॉट और वो ड्रॉ करके दिखाया है. एक्चुअली दिस इज़ द वन डायग्राम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दिखाया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. अब हमने क्या करना है, इस पोल तक, सॉरी जो डोमिनेंट पोल था हमारा माइनस 2 प्लस 2j पे, वहाँ तक हमने वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं. कहाँ से, सारे पोल्स और ज़ीरो से. 0 पे, माइनस 2 पे और माइनस 5 पे तो सिस्टम के पोल थे. P नॉट कंपनसेटर का पोल है और Z नॉट कंपनसेटर का 0 है. हर एक से आपने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया इस डोमिनेंट पोल तक. ठीक है. देन व्हाट वी डिड, वी शो द एंगल ऑफ दिस पोल P1, theta P1, angle of this 0, theta Z naught, angle of this pole, second pole, theta P2, third pole, theta P3, and pole of compensator, theta P naught. Okay, now what we'll do, in third step we will find the angle of controller pole theta P naught
using following formula. Now we need to find this theta p naught. Okay, so the formula is sum of all the angles of pole minus sum of all the angle of zeros is equal to 180 degree. Okay, so sum of all the poles, theta p naught, theta p1, theta p2, theta p3 minus sum of all the zeros, एक ही जीरो है हमारे पास, so theta z naught is equal to 180 degree. See students, we don't have any of the angle here and we need to find theta p naught. So to find theta p naught we must know theta p1, theta p2, theta p3 and theta z naught. So what we will do, we will find all these angles. How? By using the basic trigonometry. Okay, let's see what is theta z naught. अगर आपको इस ज़ीरो का एंगल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगर आप ये देखें, दिस ट्रायंगल, this perpendicular is of magnitude 2, this axis is also 2. So what is tan theta p2? Tan theta p2 is perpendicular over base. ओके स्टूडेंट्स, उससे क्या है tan, ओके हम ये वाला एंगल असल में फाइंड करेंगे, ठीक है? सो अगर आपके पास ये वाला एंगल आ जाता है और हम इसको 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास थीटा p 1 आ जाएगा. इफ़ दिस इज़ द ट्रायंगल, दिस इज़ द ट्रायंगल, थीटा जी नॉट फाइंड करना है तो हम 180 में से, दिस टोटल इज़ 180, सो 180 में से ये माइनस कर दें ये वाला एंगल तो हमारे पास थीटा जी नॉट आ जाएगा. और ये एंगल हमारे पास कैसे आएगा? दिस बेस, दिस इज़ 1.75 and this is 2, so this is 0.25 and this is 2. परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, बेस हमारे पास 0.25 है. सो tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ दिस ओवर दिस इज दिस एंगल. सो माइनस हम कर दें 180 में से तो हमारे पास थीटा जी नॉट आ जाएगा. ये इसी तरह सिमिलरली सारे स्टूडेंट्स हमने ये एंगल आप गौर से देखिएगा फाइंड किए हैं. ओके, थीटा जी नॉट 180 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू थी, बेस हमारे पास 0.25, ठीक है? तो हमारा थीटा जी नॉट आता है 97.13. सिमिलरली थीटा p1 180 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 2/2 दैट इज़ 135 डिग्री. थीटा p2 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड theta p3 is equal to tan inverse of 2/3 that is 33.693. So now we have found all the angles. Now put in above equation, that is theta p naught plus theta b1 plus theta p2 plus theta p3 minus theta z naught is equal to 180 degree. So theta p naught is equal to 180 minus 135 minus 90 minus 33.69 plus 97.13. So the angle of the compensator's pole is 18.4 degrees, 4 degree. So this is the angle of our compensator's pole. Now what we need to do in our next step, we will find position of controller pole, compensator's pole. पहले हमने कंपनसेटर पोल का एंगल फाइंड किया है, अब हम उस कंपनसेटर पोल का पोजीशन फाइंड करेंगे. ओके, अभी हमने उसकी कंट्रोलर पोल या कंपनसेटर पोल था उसका एंगल फाइंड किया है, अब हम उसकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं. सो फाइंडिंग पोजीशन ऑफ कंट्रोलर पोल, ये हमने उसी डायग्राम में से एक छोटा सा पीस उठाया है, ठीक है? सो दिस पोल वाज हियर एट पी नॉट. एक पोल कंपनसेटर का हमने यहाँ लिया था जिसके हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता था वो किस पोजीशन पे है, बस हमने खुद से शो करा दिया था, ठीक है? ये वो सिस्टम का पोल जो हमारा -2 पे पड़ा है. ओके, सो दिस -2 और ये वेक्टर जो हमने ड्रॉ किए थे अपने डोमिनेंट पोल तक. थीटा पी नॉट 18.4 डिग्री हम कैलकुलेट कर चुके हैं. हमें ये डिस्टेंस चाहिए ताकि हमें पता चल जाए हमारा पी नॉट कहाँ पड़ा है. सो वी हैव दिस एंगल, वी हैव दिस मैग्नीट्यूड, वी वांट टू नो दिस. सो tan theta is equal to perpendicular which is 2 over base which is x. So x is equal to 2 by tan theta p naught and x is equal to 2 by tan of theta p naught is 18.4 degree.
So x is equal to 6. Now pole's position is 2 plus 6. जब x हमारे पास 6 आया है, वाई वी आर डूइंग दिस 2 प्लस 6, क्योंकि हमने यहाँ 2 से लेके p तक का डिस्टेंस फाइंड किया है, जबकि हमारे पास डायग्राम में, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से देखें हमने ये वाला पोर्शन लिया है अभी, इस पोर्शन की हेल्प से हमने पोजीशन फाइंड किया है, जबकि हमें 0 से ओरिजिन से देखना है इस पोल की वैल्यू क्या है। से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 और यहाँ तक का था x, सो x प्लस 2 और x हमारे पास आ गया है 6 और 2 हमारा ओरिजिन से उस तक का डिस्टेंस है। सो पोल की पोजीशन हमारी आ गई है 8 पे। नाउ अज्यूम जो हमने किया था 0 कंपनसेटर का -1.75 पे और पोल हमारा आ गया है 8 मीन्स -8 पे। सो हमारे पास हमें पता है कंपनसेटर के ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, के सी इंटू एस प्लस जी नॉट ओवर एस प्लस पी नॉट। जी नॉट की वैल्यू भी हमें पता है, पी नॉट भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ दिस गेन जो है, ये गेन जो है हमें फाइंड करने हैं। ओके, अब हम ये गेन कैसे फाइंड करेंगे? फिफ्थ स्टेप इज फाइंडिंग कंपनसेटर गेन। फॉर्मूला है के सी गेन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल वेक्टर्स, जो हमने पोल्स से वेक्टर्स ड्रॉ किए थे अप्रोचिंग टू डोमिनेंट पोल, डोमिनेंट पोल तक हमने वेक्टर्स ड्रॉ किए थे ना, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर्स अप्रोचिंग टू डोमिनेंट पोल। ठीक है, जितने भी पोल्स थे उनके वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जीरो के वेक्टर्स से। ओके, सो दिस इज 6.32 इंटू 3.6 टू 2.82 ओवर 2, ये एक ही ज़ीरो था हमारे पास। सो इसका, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 ही है। दिस इज इक्वल टू 64.16। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेन। तो हमारे पास क्या है, फाइनली हमारा जो कंपनसेटर है, लीड कंपनसेटर, उसका ट्रांसफर फंक्शन दिस इज गेन वैल्यू, जो अभी हमने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट किया, जीरो जो हमने एज्यूम किया था और पोल जो हम फाइंड कर चुके हैं जिसकी पोजीशन। सो दिस इज द लीड compensator which we design for our given requirement, for the asked requirement for okay students। ये मैं वैल्यूज़ दोबारा से बता दूं इन वेक्टर्स की कि 6.3 टू 3.62 ये कहाँ से आई हैं। अगर स्टूडेंट्स देखें ये वैल्यू, जैसे आपको पहले पोल की मैग्नीट्यूड इसकी हमें नहीं पता, इस हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, बट वी हैव दिस ट्राइंगल, this is the perpendicular which is 2, this base is also 2, and we know the hypotenuse theorem or the Pythagoras theorem, Pythagoras theorem हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, इस साइड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इस साइड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका आ गया है इस ट्रायंगल से, हम इस ट्रायंगल से हमें पता है दिस इज़ 0.25, दिस इज़ 2, तो हमारी ये साइड का आ जाएगा। ठीक है, फिर ये मैं, ठीक है, तो इस तरह से हमने इन ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के ये वाली गेन की वेक्टर्स की वैल्यूज़ फाइंड किया जिससे हमारे पास गेन की वैल्यू है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने लीड कंपनसेटर डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम लैग कंपनसेटर डिज़ाइन करेंगे और फिर हम PIPD और PID ये डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।